Hello students, welcome back to our YouTube channel Easy Pathshala. So in our Boost Your Score series, as you have already known, that we are covering all the high weightage and easy to score chapters in this series. So don't know about this series, you can just check out our YouTube channel, which is Easy Pathshala, where you will get a playlist of Boost Your Score series. So yesterday there was a video on life processes. It has been already recorded and posted. So all the PYQs, the summary of the chapter, and most of the questions have been covered. So the same will be done for this chapter, that is control and coordination. So basically, we are going to cover it according to the chapter weightage, right? So world of living is a part of science which is very easy to score if we learn it properly and see all the previous year questions and we are clear with the concept, right? So this is comparatively easy than all other concepts present in our science textbook. So life process is already been uploaded. If you didn't watch it, please watch it. Then coming to control and coordination, today we are going to complete it. The next video would be on how do organisms reproduce, and then heredity and evolution. So basically life process has been done. All the 1 mark, 2 mark, 3 marks and 5 mark questions have been covered, which were previously asked, and few were repeated as well. If you have watched the video, you would know. Then next is control and coordination. We are going to cover control and coordination chapter in today's video. So as I've already told, this also will have the same pattern. First, we are going to summarize all the important key points of this chapter, and then we are going to see the previous year questions, marks wise, and most repeated previous year questions. So if you are doing this video thoroughly, you are done with control and coordination chapter. So please sit for 1 hour. The video will be like 1 hour 15 minutes long. So the only thing you have to do is take a pen and notebook with you, as I've already earlier told. Take a pen and paper with you, and then sit. Uh, Pause the video whenever required. All the questions would be done. So try to learn and memorize the question and answers as of when you are watching in the video. Please replay the video again. Don't hesitate to pause and note down the things. Also, the notes of the chapters will be provided in the description as well. So any changes required can be posted in the comments also. So please stay updated. Subscribe to our channel Easy Pathshala. You will get all the important tips, mandatory tips, how to present the papers. All these tips will be uploaded. So first we are focusing on covering the previous year questions. So along with that, you'll find some reels and YouTube shorts. In Instagram also, we are by the name Easy Pathshala. There also you can find our all the important things related to class 10 CBSE boards 2025. And then in reels and shorts both you can find these things, right? So let us go with the summary and key points of this chapter. So coming to introduction of this chapter, so basically I want to clear one thing. The videos will be in English medium, Hindi and English both. If any changes required, you can just post it in the comment section, right? If it is understood, please like and don't hesitate to share. Okay. So summary and key points. So introduction about this control and coordination. So control and coordination also comes under one of the life processes only, just like nutrition, transportation, excretion, and control and coordination, right? So now what is control and coordination basically? These are essential for all living organisms to perform actions and responses to stimuli. So यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि what is control and coordination? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वी कैन रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई और एनी चेंजेस अराउंड अस, ठीक है? फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली. सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा पार्ट है. हम नॉर्मली भी कोऑर्डिनेट वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं. वी यूज दैट वर्ड इन दैट सेंस कि साथ में करना चाहिए सब कुछ और ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहिए, सब लोग को कोऑर्डिनेट करना चाहिए. So same thing happens in living creatures also. What we do here is we control all the stimulus and we also organize and coordinate them with each other so that they work together efficiently. Okay, it involves the nervous system and endocrine system. The two main system that you have to know in control and coordination is you should know well about the nervous system, and the next is you should also know about the endocrine system. Fine. Now you should know what is a nervous system. Nervous system नाम से पता चल रहा है यार, इसमें nerves रहते हैं. It is all related to nerve cells and all. Nerve cells मतलब it takes in responses, it gives out responses, it takes in stimulus, it predicts and gives out the messages. So nerve systems में it is all related to nerves. So the nervous system controls and coordinates the activities of the body.
ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेटा? नर्व सेल्स होते हैं. दे कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. इफ न्यूरॉन्स में भी वी आर हैविंग टाइप्स. न्यूरॉन्स क्या होता है? दैट नथिंग बट जस्ट नर्व सेल्स, राइट. सो नाउ व्हाट आर दिस न्यूरॉन्स? तीन तरीके के होते हैं. एक तो है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकेंड है मोटर न्यूरॉन्स, देन इंटर न्यूरॉन्स. और बेटा थोड़ा पेस ज्यादा होगा व्हेन आई एम डूइंग दिस समरी एंड की पॉइंट्स बिकॉज आई वांट टू वाइंड इट अप ऑल इन 1 hour 15 minutes to 1 hour so that you don't waste your time on screen. So you can just note down all the key points, whatever are there, so that you can revise it again, you can replay the video and watch wherever it is necessary. I'll be little fast and paced because you have to cover all the high weighted chapter and you have to boost your score, which you are getting less in your pre-board examinations. In your board examinations, it should be increased by at least 10, 15 to 20%. Who are facing difficulties in writing the paper and memorizing the answers, it should be very easy for them. After completion of this entire PDF and the PPT, you will be very much clear about what you have to write, how you have to write, and जब भी आप पेपर देखोगे ना बेटा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया क्वेश्चन देखा है आपने. So you should not be surprised while seeing the question paper ना. You should be very managed and well balanced while writing the paper. आपको देख के याद आना चाहिए कि क्या क्या लिखना चाहिए. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. सो स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन में आपको पहले तो वो डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आप एक न्यूरॉन को ड्रॉ करके उसके सारे पार्ट्स को लेबल करोगे. नाउ यू शुड आल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन कौन सा पार्ट क्या क्या चीजें करता है. तो पहले एक हो गया सेल बॉडी. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन हो जाता है. इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है. देन डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दे रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स. दे आर लाइक ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स. देन आता है एक्सॉन. दिस ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और द टारगेट सेल्स. ये क्या करता है? एक न्यूरॉन से जो अभी एग्जिस्टिंग न्यूरॉन है उस न्यूरॉन से अदर सेल्स, अदर नर्वस सेल्स को दिस ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम नाउ. वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज सीएनएस. नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फाइन. सो इसमें क्या होता है? इन सीएनएस इट कंप्राइजेस द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल पार्ट्स, so which are brain and spinal cords. जबकि peripheral nervous system वो होता है which is made up of nerves that branch out from the CNS to various other parts of the body. ठीक है? Clear? Next we'll know here about brain and its functions, right? Brain कौन से function करते हैं? We have to see it now. So we already know it controls the it is the control center of our body and we are having different parts of brain. तो यहाँ पे the three major parts of this brain are, एक है cerebrum, दूसरा है cerebellum, तीसरा है medulla oblongata. So यहाँ पे जो cerebrum है that is responsible for reasoning, thought process, memory and voluntary actions. Please note it down. Cerebrum is responsible for reasoning, thought process, memory storage and voluntary actions. फिर next हो गया cerebellum बेटा which controls balance. फिर it controls the posture of our body and it also helps in coordination of voluntary movements. ठीक है? नेक्स्ट आता है medulla. It controls involuntary actions जैसे कि हो गया हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती है. So there are two types of actions here to be noted down. एक होता है बेटा voluntary action, दूसरा होता है involuntary action. Voluntary action वो होता है जिसमें हमारी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जबकि voluntary actions are those in which we control them. Okay, we can control them. While involuntary actions वो है जहाँ पे हमारी intervention की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. It happens without our knowledge, but inside our body. ठीक है? फिर नेक्स्ट आते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शंस में. रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी एक्शन है जो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स रहता है जो भी स्टिमुलस को. स्टिमुलस क्या हो गया बेटा? द चेंजेस अराउंड अस या फिर कुछ भी सिचुएशन है जिसमें हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज को, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज वेरी इमीडिएट ना. दिस इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है? इट इज मीडिएटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन. ठीक है? फिर आता है बेटा एग्जाम्पल जिसमें हम बोलते हैं नी जर्क. नी जर्क जो होती है रिस्पॉन्स और टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट्स एंड पुलिंग बैक इमीडिएटली. हम देख सकते हैं अगर हम एल्बो या फिर हमारे पाम को इफ वी कीप नियर अ हॉट सब्सटेंस हम क्या करते हैं उसको छू के
तुरंत निकाल देते हैं. दैट इज नॉट अंडर आर कंट्रोल. हम जानबूझ के नहीं करते कि हमें निकालना है हाथ करके. हमसे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो इट इज अ इमीडिएट रेस्पॉन्स दैट इज क्रिएटेड बाय आवर बॉडी. पर इसमें हम क्या बोलते हैं, यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट यहाँ पे कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन एंड इट इज ओनली बाय स्पाइनल कॉर्ड. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वन बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम. मैंने बोला था इसमें एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट. नर्वस सिस्टम हमने देख लिया, अब देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम. सो नाउ endocrine system क्या हो गया बेटा? It is a network of glands that secrete hormones into the bloodstream to regulate any bodily functions. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? वो कंट्रोल करती है प्रोसेसेस को, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, ऑल दिस स्टफ वी टॉक अबाउट इन आवर एवरीडे लाइफ. सो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मेजर सिस्टम व्हिच कंट्रोल्स ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. फिर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स क्या हो गई एंडोक्राइन सिस्टम में? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास, गोनाड्स. सो आप पिट्यूटरी ग्लैंड देखो बेटा, इट इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड. इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इट इज वन ऑफ द मास्टर ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स ऑल्सो. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड. इट प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन. ठीक है. ग्लैंड्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स. सो इट थायराइड ग्लैंड याद करना आसान है, थायराइड और थायरॉक्सिन. It regulates what? Metabolism of our body. Right? Next है adrenal gland बेटा. It produces adrenaline. It controls the stress response. Next आता है pancreas. It produces insulin. It controls the blood sugar levels. ठीक है. हम पढ़ते हैं ना, वी ऑल्सो नो, हमारे घर पे भी कोई होगा या वी नो समवन हु इज सफरिंग विद दिस डायबिटीज एंड दे टेक इंसुलिन इंजेक्शंस. व्हाई दे डू टेक दिस इंसुलिन? सो दैट इट कंट्रोल्स देयर ब्लड शुगर लेवल्स. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट आता है पैंक्रियास बेटा. पैंक्रियास का हो गया. फिर हो गया गोनाड्स. गोनाड्स क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जैसे कि टेस्टिस इन मेल्स हो गया, ओवरीज इन फीमेल हो गया. So these are the important glands that are present in endocrine system. जब भी आपको बोला है बेटा endocrine system के बारे में लिखने के लिए, so you just have to write this introduction and you have to write the important glands in this. So next thing that we are going to see is, हमने nervous system के बारे में देख लिया. Then we have also have a brief introduction about endocrine system. Now we are going forward for tropic movements. So tropic movements तो जाने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि tropism क्या है. So the directional growth movement of plants in response to any external stimuli. मतलब एक ऐसा डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट एक प्लांट में होता है. दिस इज हैपनिंग इन प्लांट. प्लांट में होता है किसके रेस्पॉन्स में बेटा? कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स के ग्रोथ में. दिस इज नोन एज ट्रॉपिज्म. ठीक है. अब इसमें भी तीन तरीके हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट विल बी आस्क्ड फॉर योर एक्सप्लेनेशन अगेन एंड अगेन है कि फोटोट्रॉपिज्म के बारे में तो वो लोग पूछेंगे. फोटो मीन्स लाइट बेटा. तो फोटोट्रॉपिज्म ये क्या होता है? एक डायरेक्शनल ग्रोथ है प्लांट में विच हैपेंस इन द रिस्पॉन्स टू लाइट. लाइट जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट या उस डायरेक्शन के हिसाब से दैट प्लांट डायरेक्शनल ग्रोथ रहेगा, उस तरफ ये उगना स्टार्ट होगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट है ग्रेविट्रॉपिज्म. ऐसे बोल इसमें लिखा ही है ग्रेविट्रॉपिज्म. इट इज ग्रेविटी. तो दिस द ग्रोथ विच इज इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी. फिर थिग्मोट्रॉपिज्म ये पूछा नहीं जाता बट यू कैन जस्ट लर्न इट. थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? इट इज द ग्रोथ इन द प्लांट्स विथ रेस्पॉन्स टू द टच. ठीक है. अब हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ लिया. आपको जब भी ट्रॉपिज्म के बारे में पूछेंगे यू जस्ट हैव टू राइट कि एक डायरेक्शनल ग्रोथ होता है प्लांट्स में विच इज इन रेस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. वो लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है या फिर टच हो सकता है. देन हम इसी के बेसिस में उसको डिवाइड करते हैं इन फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म. आई होप दिस इज क्लियर. द समरी क्या हो गया इन सब चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चा? ये हो गया कि द बॉडीज एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जो भी हम बॉडी में कंट्रोल करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एंड वी परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एंड ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग टुगेदर, ऑल दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो इसमें दो मेजर रोल्स प्ले करती है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम और हमारी नर्वस सिस्टम. सो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है? दैट ऑल्सो यू शुड बी एबल टू राइट. रिफ्लेक्स एक्शंस एक ऐसी एक्शन है विच इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई. ठीक है. इन प्लांट्स क्या होता है? हार्मोन्स कंट्रोल द ग्रोथ एंड रेस्पॉन्सेज टू दीज थिंग्स. Then these are the key points of all the control and coordination chapter which will help you for preparing for the CBSE
board exams. So keep all these points in your brain while writing your exam. Okay, if you don't know any answer, you can just know the topic and then elaborate your answer accordingly. So these are all the key topics. If you know this, you can answer any question from the chapter. And also I have told in my earlier videos, whenever you are writing or attempting any question related to biology, if you find any related diagram to it, छोटा सा भी diagram हो उसमें, you can just draw it there itself. Okay, don't at all present your paper without any diagrams. Wherever biology is there and there are any related diagrams with that particular topic, even if it is not asked in the examination question paper, you have to still draw to uh, present it really well. Now, whenever the evaluator is correcting, he should be attracted while correcting your paper. कभी कभार बच्चे ऐसे होता है कि when the evaluator is correcting the paper, he sees all the important points and the underlined points by you and the diagram and the correct labeling is there, he'll give you full on full marks. So if you know the diagrams, draw it properly, and while answering the questions in paragraphs, if you are doing it, please underline all the key points, because the evaluator can't waste his time reading line by line, word to word, and it will be very confusing for him to correct it, right? So please present it really very well. So next we'll go for all the previous year questions. So first we'll start with 1 mark questions. So Vachu, now we'll start with all the 1 mark questions. Okay? Please take a pen and notebook with you. Note down all the important points that you feel like writing down. Pause the video, learn the questions, memorize them here when you are in the video. So what I'll do is first मैं क्या करूंगी, पूरे ये चीजों को explain कर दूंगी अच्छे से. Then you can just pause the video, एक बार याद करने की कोशिश करो. Then we'll go for the next slide. ठीक है? So next अभी हम लोग क्वेश्चन वाइज करने वाले सारी चीजें 1 mark, 2 mark, 3 and 5 marks. So ये एक 22 स्लाइड्स का पीपीटी है. अगर आपको ये चीजें अच्छे से आ जाएंगे, यू कैन सिक्योर योर एंटायर मार्क्स इन दिस चैप्टर. तो देखो बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इजी चैप्टर्स. आप देख सकते हो कि इफ यू आर नोइंग दिस नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपरली विद डायग्राम्स ना, आप इस सब्जेक्ट में यू कांट लूज योर मार्क्स. ठीक है? There's 4 chapters: life processes, control and coordination, how do organisms reproduce, heredity and evolution. एक ऐसे 4 chapters है which are for 25 marks and you can easily secure them. बहुत easy है, बहुत आसान है as compared to all other chapters in your NCERT science textbook. So please ये चीजें करो. I'll also explain the other chapters also in an easy way. मैं try करूंगी कि सारे PYQs cover हो जाए आपके in this last days, ताकि आपको एक फाइनल रिवीजन मिलेगा. एंड जो भी बच्चों को अभी 65 to 75% मिल रहा है, प्लीज डोंट एट ऑल डीमोटिवेट योरसेल्फ. प्लीज सिट अगेन, ट्राई टू सॉल्व ऑल द PYQs क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से आप याद करना स्टार्ट करो. ऑलरेडी इन समरी आई एम कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रही हो वहां पे. नथिंग मोर इज देयर. आफ्टर समरी इज कंप्लीटेड, यू कैन जस्ट जंप ऑफ टू द क्वेश्चंस. आप फिर जाके बैठ सब पढ़ने की कोशिश मत करो. डू ऑल द PYQs. नाउ इट इज नॉट द टाइम फॉर डूइंग ऑल द थिंग्स इन डिटेल. नाउ इज द टाइम फॉर डूइंग all the repeated questions so that you can learn according to the questions. Question में कौन सा concept पूछा है, वो concept आपको आता है कि नहीं. If you are not getting that concept, you learn it. Then you come to the question. Then you learn the answer. ऐसे आप एक 1 hour का वीडियो देखोगे, then 1 hour you learn for memorization हो जाएगा. Then your entire chapters will be done like this. ठीक है? Don't waste your time. You'll just work hard till March 15. Then all your things are done. Fine? So we are going with the question and answers now. So first question है बेटा, name 2 specialized tissues that provide control and coordination in multicellular organisms. अब आपको पता चला चाहिए कि multicellular organism क्या होते हैं, animals and human beings. So इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन से ऐसे specialized tissues present हैं in multicellular organisms के अंदर, जो हमें ये control and coordination करने के लिए help करता है. कौन सी 2 चीजें बेटा, nervous tissues and muscular tissues. क्लियर? इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं है, याद करने के लिए कुछ नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट राइट हियर. पॉज द वीडियो एंड देन लर्न इट. द नेक्स्ट वन इज लिस्ट 2 बॉडी फंक्शंस दैट विल बी affected if cerebellum gets damaged. अगर हमने पहले ही पढ़ा था ब्रेन की 3 मेजर पार्ट्स होते थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. अब इसमें से दे आर आस्किंग यू, सेरिबेलम अगर हमारे दिमाग का, अगर हमारे ब्रेन का डैमेज हो जाए तो व्हाट इफेक्ट रहेगा हमारे बॉडी के फंक्शनैलिटी में. सो एक है, हम एक सीधी लाइन पर ठीक से चल नहीं पाएंगे. दूसरा है, अगर कुछ चीज जमीन पे गिर गई तो हमें उसे उठाने में भी इट विल बी डिफिकल्टी, वी कांट डू इट. ठीक है?
नेक्स्ट इज राइट द रोल ऑफ मोटर एरियाज इन द ब्रेन. तो बेटा जहां पर भी आपको एक चीज याद रखो, जहां पर भी आपको मोटर कीवर्ड दिखता है, इट मीन्स दैट इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट. मोटर इज इक्वल टू मूवमेंट. तो इन्होंने पूछा है कि जो भी ब्रेन में मोटर एरियाज है उसका रोल क्या है. तो मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स. देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स. मैंने बोला था मोटर इट इज रिलेटेड विथ मूवमेंट, तो ये हो गया. नेक्स्ट है गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. देखो बार बार वही चीजें पूछ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में. अगर यू आर क्लियर यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो साइंटिफिक नेम्स क्या है. रीजन ऑफ साइट को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब बोलते हैं बेटा. इट इज फ्रॉम द फोर ब्रेन. फिर नेक्स्ट रीजन विच कंट्रोल्स आर सलाइवेशन सलाइवरी, देन दैट इज मेड्यूला ऑब्लिगेंटा विच इज ऑफ द हिंड ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन हिंड ब्रेन. व्हेन वी विल सी इस क्वेश्चंस में आई हैव आल्सो हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन जहां पे हम देखेंगे ये सारी चीजें बेटा. डोंट वरी अबाउट इट. सो रीजन फॉर साइट जो है इट विल बी टेम्पोरल लोब जो फोर ब्रेन में प्रेजेंट है. Then which controls our salivation, that is medulla, which is part of hindbrain. Fine. Now all the information of our environment is detected by specialization of some nerve cells. Right, the name given to such tips are mentioned when they are located. They are known as receptors. बेटा ये लोग यही पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है नर्व सेल में which is मोस्टली उसका एक्शन रहता है, उसका मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट शुड डिटेक्ट द एनी stimulus. ठीक है, and you have to send it to the brain and get the signals back from the brain, right, or the other nerve cells. So ये होते हैं receptors बेटा, and they are located in the sense organs. Next is state the function of gustatory receptors and olfactory receptors. Gustatory बेटा it detects the taste. Olfactory आपको याद रखिए, olfactory related to smell, so it detects smell. Gustatory detects taste, then olfactory detects smell. Before moving to the next slide, you should be clear with all the 6 questions. Part by part करते रहोगे, आपका 1.5 hour 2 hours में entire chapter will get done. Fine. Next, which part of the nervous system controls all the reflex arts? So spinal cord does all these things. Next is what type of movements is shown by mimosa plants leaves when touched by a finger. थोड़े होते हैं ना touch me not plants. वो क्या करती है जब भी हम टच करते हैं उसके लीव्स को, इट क्लोजेस. सो वैसे प्लांट्स को बोलते हैं वो टाइप ऑफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं, तो उस टाइप ऑफ प्लांट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट. The next is which trophic movement is responsible for the growth of pollen tubes towards the ovules. कौन सा ऐसा trophic movement है, so that is called chemotropism. हमने ऑलरेडी ट्रॉफिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था इन प्लांट्स, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, गैविट्रॉपिज्म, याद है. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल्स के बारे में ऑब्वियसली. सो इट इज ये ट्रॉपिक मूवमेंट को हम बोलते हैं केमोट्रोपिज्म बेटा. नेक्स्ट इज व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैंने बोला था दे हैव सम सिक्रीटिंग हार्मोन्स इन देम. ये जो है इनकी सिक्रीशंस ब्लड में क्यों पंप करती है, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस. डक्ट्स नहीं है जिसमें they can't store this glands है बेटा, they can't store the secretions, so they have to release them into the blood. Next आता है at the time of puberty both boys and girls show lot of changes in appearance. Name the hormone responsible for these changes. Testosterone in male and estrogen in females. ये बहुत जगह काम आएगा आपको. if you learn this here next chapter के लिए भी this will be easy. Okay beta. Next is which system facilitate the communication between central nervous system and other parts of the body. Endocrine system does this. Okay, CNS control सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ा था. 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं बेटा. वन है एक है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस. सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कम्युनिकेशन बिटवीन द सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. कौन सा सिस्टम करवाता है ये चीज, एंडोक्राइन सिस्टम करवाता है. नेक्स्ट इज विच ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग्स. पिट्यूटरी ग्लैंड. Next is which mechanism controls timings and amount of hormones. So feedback mechanism control करती है क्या, कौन से टाइमिंग में कौन सा हार्मोन और कितना हार्मोन रिलीज होता है. Then next define chemotropism बेटा. chemotropism के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है. So chemotropism is nothing but a nastic response towards anything, any external
stimulus, like germination of pollen tube हो गया when pollen grain lands on the plant parts. So this is called as chemotropism. Next, beta, what are hormones? Now, hormones are the chemical substances which are secreted in some trace amounts by specialized tissues called as endocrine glands. अब ये endocrine system जिसमें endocrine glands है, ये क्या करती है बेटा? Hormones को release करती है. Hormones क्या होते हैं पहले? They are some chemical substances. ठीक है, chemical substances होते हैं and they are also secreted in the human blood only in some trace amounts, छोटे छोटे amounts में. Then next, name two tissues that provides control and coordination. देखो, again it is repeated. Nervous tissue and an endocrine tissue. Then what is a synapse? Synapse is the functional junction between two neurons. मतलब दो neurons जब एक junction form करती है, उसके बीच का जो part है, that is called as synapse. It is a gap junction point between the nerve endings of one neuron and dendrites, which is starting point of the another neuron. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफाइन अ रिफ्लेक्स एक्शन. हमने ऑलरेडी पढ़ा था समरी में. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है. ठीक है. फिर नेम द सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड इन द नोज एंड ऑन द टंग. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओके, फॉर द स्मेल, एंड गस्टेटरी रिसेप्टर फॉर द टेस्ट दैट इज प्रेजेंट ऑन द टंग. सो आपको अगर पता है ऑल्फैक्टरी किसके लिए है एंड गस्टेटरी किसके लिए है, अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए आप लिख सकते हो उसको. Next is, give one example of chemotropism. Again, the growth of pollen tube towards the ovule. This is a example of chemotropism. Next one is, give one example of pollinism is done. Then name the plant hormone responsible for the promotions of cell division. So this is mostly asked, okay? So that is what, name the plant hormones which is responsible for promotion of the cell division. Cell division में help करता है. कौन सा हार्मोन करता है बेटा? साइटोकिनिन करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ इज नर्व इम्पल्सेस गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस दिस सिनेप्स. सो न्यूरॉन एंडिंग ट्रांसमिट करती है डेंड्राइट से लेके दूसरे नर्व एंडिंग्स में. ठीक है. कैसे? बाय यूजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर. एक केमिकल के थ्रू करता है एंड दैट केमिकल इज नथिंग बट अ न्यूरो ट्रांसमीटर. क्या करता है बेटा? ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को बस. Then next is, what will happen to the plant shoot if sunlight falls on the system? अब देखो, लाइट के बारे में पूछा है, प्लांट के बारे में पूछा है, एंड इट्स डायरेक्शन के बारे में पूछा है, तो इट इज सिंपली फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है. मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट. मतलब ग्रोथ जो उसका होता है, इट इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट बेस्ड ऑन द सनलाइट या फिर लाइट. नाउ, हाउ इज स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? With vertebral column made by vertebrae protects this spinal cord. Fine. Next, 1 mark questions are successfully completed now. Next, we are going for 2 mark questions बेटा. देखो, बहुत सारी चीजें रिपीट होगी. जहां पर भी रिपीट हो रही है, I'll not waste a lot of time. I'll just tell you what it is. Okay? So, you'll not waste your time more. अब हम बोलेंगे this all, जितने भी चीजें हैं, जितने भी समरी पॉइंट्स में कवर्ड है, वही चीजें बार बार की जाती है all this questions में. If you're clear with all the summary and key points, you can answer any of the question in 1 mark हो या 2 mark का हो, 3 mark का हो या 5 mark का हो. If you know the diagram, if you know the concept, you can write it completely. Now, name one gustatory receptor and one olfactory receptor present in human beings. तो एक होता है टंग में, दूसरा होता है नोज में. अगेन इट इज रिपीटेड बेटा. राइट A and B in the given flow chart. डेंड्राइट से A पे जाता है, फिर B में, फिर एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन. मतलब अगर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है तो यू कैन टेल इट. डेंड्राइट से बेटा जाता है सेल बॉडी में. सेल बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जाता है एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन तक जाता है वो. ठीक है. Then what is a neuron? Neuron is a functional and structure unit of nervous system. These cells are specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another part. फिर नेक्स्ट हो गया, इंफॉर्मेशन कैसे अकर होता है, कौन से पार्ट ऑफ न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं. डेंड्राइट्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं. नेक्स्ट, इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर फॉरवर्ड ट्रांसमिशन. ये कहां से हो सकता है? एंड ऑफ एक्सॉन से हो सकता है. फिर दे आर राइटिंग अबाउट 2 डिफरेंट रेस्पॉन्सेज. प्लांट्स एंड एनिमल्स के रेस्पॉन्स में क्या डिफरेंट है. ठीक है. एक है प्लांट्स में बेटा नो स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. जबकि एनिमल्स में क्या होता है? दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर कंडक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स आर फाउंड इन मसल सेल्स व्हिच हेल्प इन
changing the shape. Now, how does this feedback mechanism regulates the growth hormone secretion? Feedback mechanism regulates the timing and amount of the hormone to be secreted. Example, if a person has more sugar in his blood, this is detected by the cells of the pancreas responsible for insulin. As a result, more insulin will be secreted to oxidize this sugar. In a reverse simulation, the secretion of insulin will be reduced. ठीक है? This is very much understood. अगर आपको pancreas के बारे में पता है, what it secretes, you know, then you can write. Feedback mechanism basically क्या करता है बेटा? एक हार्मोन का रिलीज का टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हाउ मच हार्मोन शुड बी released and secreted. This is detected by this, maintained by this feedback mechanism. Next आते हैं हम बेटा, what is meant by hydrotropism? Give an example. Hydro related with water. So the response of a plant towards water is called hydrotropism. The roots of plants show positive hydrotropism. Next, define phototropism and give one example. Again the same thing. Movement of plant parts towards the light is called as phototropism. Example, stem of plants usually move towards the light. They bend or they move towards the light. है ना? This is done in presence of light. So phototropism in the presence of light, growth होता है. Hydrotropism in the presence of, with respect to water, growth होता है. Next is tendrils encircle or coil around the object in contact with it. Why it is so? So tendrils जो है sensitive होती है touch के लिए बेटा. So they come in contact with any support. The part of the tendrils come in contact with the object and does not grow rapidly as a part of the tendril is moved away from the object. This causes the tendril to circle around it or encoil around the object and thus cling to it. Right? हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन. आप देख सकते हो 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा है इस चैप्टर से, 2 मार्क के क्वेश्चन थोड़े कम है. लेट्स सी अबाउट 3 मार्क क्वेश्चंस. नाउ अगेन, name the hormones secreted by the following endocrine glands and specify the function of each of them. So glands secrete करती है hormones that we know. So we are going to see what are these hormones and glands do. So thyroid gland, it secretes thyroxine. It regulates क्या? Metabolism of carbohydrates, fats and proteins in our body. Next है pituitary gland बेटा, this is mostly responsible for growth. So it secretes growth hormone. Growth hormone regulates growth and development of body. Then next है pancreas. You already know about it. It is responsible for insulin. So it secretes insulin. Insulin lowers the blood sugar level. अब बेटा आप देखो, अगर ये ग्लैंड्स के बारे में you know it very much thoroughly, what hormones does it secrete, then you can write pages about it. So once you are clear with it, pause the video, learn the answer, then move forward because there are mostly repeated questions asked every year. And आप देख सकते हो इस PPT में भी कितने repeated questions है. Means repeated question doesn't mean एक ही structure में रहेगा. It means that concepts are similar. The same concept, if you know once, you can write 10 questions related to it. ठीक है? Next, state how concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of shoot which is away from light. So oxygen form in the shoot tip. Shoot tip में oxygen present रहता है, but diffuse towards a part which is in shade or away from the light. The concentration of the shady part increases the stimulation of cells in this part to elongate. So the side of the shoot on this side grows longer than the other parts in the light. Hence they bend towards the light and not away from the light. Next, name the hormone which is secreted by adrenaline glands. Adrenaline, this is already done, so I'm not telling in detail. So adrenaline क्या करता है बेटा? Oxygen level in the blood को pump करता है and it is done basically in the muscles. ठीक है? Next, how does chemical coordination occur in plants? Explain them. So in plants, chemical coordination occurs through various phytohormones. So जो भी present है प्लांट के हार्मोन्स में, एक होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है गिबरेलिन, नेक्स्ट होता है साइटोकिनिन, नेक्स्ट होता है एब्सिसिक एसिड. तो बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर इफ यू नो वन डायग्राम, एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम रहेगा अबाउट द टिप्स में ऑक्सिन्स है एंड ऑल दैट थिंग्स, गिबरेलिन कहाँ पे, साइटोकिनिन कहाँ पे. सो इफ यू नो द डायग्राम, इफ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम हियर and then write the functions. Oxygen क्या करता है बेटा? It is secreted by the growing tissue. They provide growth of the plant. ये tips में रहता है. Then gibberellins, they cause the stem to elongate, seed germination and flowering के लिए. Then cytokinin हमने already पढ़ा था. It is present in the areas of actively
dividing cells like fruits हो गया, seeds हो गया, they promote cell division. Cytokininin promotes cell division. Then next, abscisic acid inhibits growth and respond to the environmental stress as well. ये growth को भी secrete करता है, but also they also respond to environmental stress. Next, ये देखो एक case based type का question है. An old man is advised by his doctor to take less sugar in his diet. Name the disease from which the man is suffering. Easily, diabetes. Then next, mention the hormone due to imbalance of which he's suffering all this pancreas, and the hormone responsible for this is insulin hormone. Okay, which endocrine gland secretes this hormone? Pancreas is the gland which secretes, and what it is secreting? It is secreting insulin. Next, name the endocrine gland which secretes growth hormone. Pituitary gland. Okay, deficiency of growth hormone जब होगा, this pituitary gland, it causes दिस ग्रोथ हार्मोन उतना होगा नहीं उस ऑर्गेनिज्म का उतना ग्रोथ होगा नहीं ना इफ इट इज डेफिशिएंट विद दिस ग्रोथ हार्मोन देन एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है इट कैन कॉज जाइजेंटिज्म मतलब आप बिग बिग जायंट्स को देखते हो ना सो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स ठीक है अ ग्रोथ हार्मोन इन आवर बॉडी देन गिव टू फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम क्या करता है this is already covered. So now, give reasons why pituitary gland is often termed as a master endocrine gland. Okay. So pituitary is often called as master endocrine gland because it controls and coordinates the secretion of all the other endocrine glands. एक तो है pituitary controls the growth, but also ये क्या करता है सारे other जो भी glands है उसका secretion भी it controls. So that is why it is called as master glands. Next है बेटा pancreas helps in digestion and it also helps regulates the blood sugar level. आपको इधर इंसुलिन के बारे में लिखना पड़ेगा and they have a pancreatic juice which helps in the digestion. ठीक है नेक्स्ट है adrenaline. It is secreted directly into the blood and it is carried to different parts of the body. It acts on the heart. As a result, the heart beats faster in order to supply more oxygen to our muscles. The blood to the digestive system and the skin is reduced due to the contraction of muscles around the smaller arteries. ठीक है? It increases because of the contractions of the diaphragm. So breathing rate is being affected here. Diaphragm के बारे में दिया it means breathing rate is being affected and the rib muscles. All these responses together enable the animal body to get ready to deal with the situations. Now draw a label diagram of neuron and helps how explain how it transfers the messages all those. So you have to write about dendrites, nucleus, cell body, axon and all the stuff there. So this is the nerve wala diagram. Maybe it's not clear here, but yeah, you know all the parts that has to be written. This is the NCERT textbook का ही diagram है बेटा मैंने उसी diagram को उठा के यहाँ पे लिया है. Then next, which hormone is secreted during emergency situation or anger or excitement? ये है adrenaline, ठीक है जहाँ पे heartbeat effect होता है, it gets faster बेटा जिसकी वजह से supply of oxygen to muscles, more blood to skeletal muscles, increased breathing rate भी होता है. It provides energy to muscles to act swiftly. Next is name the part of brain which controls the voluntary action. Voluntary actions are controlled by cerebellum, ठीक है. Involuntary actions they are controlled by medulla oblongata. Next is the communication between उन्होंने पूछा है what is the significance of peripheral nervous system. Peripheral nervous system क्यों? मतलब the communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by this PNS system. So, cranial nerves arise from the brain and spinal nerves they arise from the spinal cord. Cranial nerves arise होती है brain से बेटा and जो spinal nerves है obviously name में ही है it is arising from the spinal cord. ठीक है नेम द डिजीजेस द पर्सन इज लाइकली टू सफर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो गॉइटर होती है ये हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है देन या फिर इंक्रीज है देन इट इज लाइक डायबिटीज कॉज होती है वी हैव डन इन मल्टीपल क्वेश्चंस इन दिस पीपीटी द सेम थिंग पूछा गया अगेन एंड अगेन then how the timing of secretion and amount of the hormones is controlled it is by what and all you have to write. Why this they have so here asked the timing and the traces of the amounts मतलब कौन ये कंट्रोल करता है बेटा it is controlled by feedback mechanism. Next done with 3 mark questions last is 5 mark questions. So 5 mark questions में मैंने बोला था if you know the
two nervous systems, nervous systems, you can write about the nervous system, दो nervous system है उनके, the neuron and then done. अगर आपको endocrine system के बारे में पूछा, you write about the glands and then you also mention about the human brain. आप जब human brain के बारे में mention कर रहे हो, it is very important to draw the diagram and neatly label it. Okay. So here they have asked you, draw a label diagram of human brain, discuss the function of cerebrum, cerebellum and medulla. Okay, or they can also ask you like draw and describe the role of various parts of human brain. तो आपको पहले पता चलना चाहिए कि human brain they has three major parts. एक है forebrain which contains the cerebrum, then midbrain, then hindbrain. Functions क्या होती है बेटा? Cerebrum क्या करता है? It controls the posture, balance of the body and accurate voluntary movements. जो हमारे हाथ में है, it controls all this. जो आपकी जो midbrain है, it regulates the respiration system and all this stuff. Then next होता है बेटा हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में मेड्यूला प्रेजेंट है, तो इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सेलिब्रेशन हो गया. Then you'll draw this diagram. See how neatly if you draw the diagram, they'll not even see all this theory. They'll just see your diagram. They'll give you full marks. Okay. Please note down the important points. Draw the diagram. Pause the video. Draw the diagram. Practice it, and then go for the next one. ठीक है. देखो cerebrum. This is the part. फिर हो गया cranium, which is the skull, which is used for protecting the brain. Then this all is called as forebrain. Then you have pituitary gland, which regulates the growth hormone. Then you're having the medulla, cerebellum, and spinal cord, which this all is connected to. Next is describe the activity to illustrate the phenomena of phototropism and explain why does it occur. पहले आपको लिखना पड़ेगा कि phototropism क्या है बेटा. Phototropism क्या है? The growth of the directional growth of the plant in response to light. Photo is light. So phototropism. आप इन्होंने पूछा है कि एक एक्टिविटी शो करो जिसमें आप दिखा रहे हो कि फोटोट्रॉपिज्म के हिसाब से एक प्लांट का ग्रोथ इज बीइंग अफेक्टेड. सो टेक अ प्लांट फर्स्ट and make a such an arrangement that it receive the sunlight coming from a window as shown in the figure. देखो एक विंडोज के अंदर से लाइक विंडो के बाहर से सनलाइट आ रहा है एंड प्लांट इज प्लेस्ड देयर जहां पे सनलाइट फेस कर रहा है वो. देन नाउ टर्न एंड ऑब्जर्व इट फॉर फ्यू डेज. देन क्या कर रहे हैं हम? वी आर टर्निंग द फ्लावर्स सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द रूट्स आर टूवर्ड्स द लाइट. हम क्या कर रहे हैं? जो शूट्स है दैट आर अवे एंड जो रूट्स है उसको हम प्लांट सनलाइट के हिसाब से रख रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी द मूवमेंट ऑफ दिस. सो लीव इट अनडिस्टर्ब in this condition for few days. Again, observe carefully to find the difference of the movement. When growing plants detect light, oxygen synthesized at the shoot tip helps the cells to grow longer. Oxygen always diffuses towards the shady side of the shoot. So, this concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus, the plant appears to be bent towards the light. Okay? So, you have to take a cardboard here. A plant is placed. A conical flask is placed. Plant ka root hai. Plant ka shoot hai. Then we are writing about the sunlight and wire mesh. You can place it. So, we are done with all the 1 mark, 2 marks, 3 marks and 5 mark questions. आप देख सकते हो इस चैप्टर से ज्यादातर 1 and 2 mark के क्वेश्चंस पूछे हैं एंड 5 mark का क्वेश्चन पूछा है दैट इज वेरी इजी. दैट इज एक नर्वस सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं. आप न्यूरॉन को ड्रॉ करोगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आप लिखोगे उसमें. अगर इंटोग्राइन सिस्टम के बारे में पूछा या फिर ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछा, यू कैन राइट अबाउट ऑल द ग्लैंड्स, यू कैन ड्रॉ द ह्यूमन ब्रेन, टेल द 3 डिफरेंट मेजर पार्ट्स ऑफ दिस ह्यूमन ब्रेन जो है सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड देन मेडुला के बारे में आप लिखोगे, कौन से एक्शंस वो कंट्रोल करती है. यू कैन नीटली राइट इट इन 2 to 3 पेजेस. अच्छे से आप लिख सकते हो फॉर 5 marks, है ना. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स. प्लीज डोंट अवॉइड writing diagrams. So congratulations, you have completed this all the PYQs from the chapter Control and Coordination. Thanks a lot for watching. Please like, share and subscribe our channel Easy Pathshala. More upcoming videos will be there. Please like and share. We are putting a lot of efforts for making this making all these videos. Please like and share. This will give a lot of motivation for us to make more videos. Any suggestions you can just post it down in the comments. Please subscribe to our channel and like the videos too. Thanks for watching.